one of the strangest and most mysterious approaches to a major national security issue is the Rafale aircraft issue and its purchase from France. What is extremely mysterious, and I'll come to the facts in a moment, and were it not tragic, it would be actually comic, is the series of unanswered questions raised every day by the antics, the omissions and acts of the central government, of different levels of the central government, and of a level no less than the defense minister himself. I want to start by giving you, in less than a month, on 5 different occasions, no less than the defense minister of the country, on the highest post, saying the following. And if the country is not mystified, to put it mildly, I wonder what answers we can have for this kind of a flip, and complete utter chaos and confusion. On April 13th, the defense minister says, I quote and unquote, any Rafale purchased in future over and above the 36 announced on Friday would be through direct negotiations with France. On April 16, 3 days later, he says, quote unquote, I feel that some more Rafale jets will be required, but need to figure out how we can acquire them. So it's uncertain on April 16 in his mind how to acquire them. He doesn't specify a figure. On May 11, under a month later, that is this month, he says, the basic message is that the Rafale deal has been restricted in number. Doesn't give what number. By doing this, we will free about 60,000 to 65,000 crores. Money which will be used for Make in India. Reading this, it suggests that we are not going to buy any more than 36 Rafales, and by not buying more than 36, we will save 65,000 odd rupees crores and promote Make in India. On May 26, he says, 5 days ago, quote unquote, I am not saying we will buy more Rafale. I am not saying we will not buy more Rafale. Unquote. On May 31st, I am going to give you a sheet with all the 5 quotations. I'll give you a sheet with all the 5 quotations. And remember their quotes. Last quote, fresh with ink on the paper, is 31st of May, 3 days ago. We are not buying the rest. We are buying only 36 direct. I also feel like having a BMW and a Mercedes, but I don't because I can't afford it. First, I can't afford it, and second, I don't need it. Mark the word need it, mark those words. So 126 Rafale was economically unviable, it was not required. This is an amazing set of statements, friends. I want to ask the following questions. 1. It appears that the statement now is that we will buy flyaway condition 36 and no more. Is it so or not? Please clarify, Mr. Government of India, Mr. Defense Minister. Your statement suggests clearly, I have quoted 31st May. Number 2, if this is so, and ironically it is supposed to promote Make in India, then what happened to the repeatedly emphasized, much repeated and hyped, Make in India TOT component of the deal, transfer of technology? Because these 36 are on flyaway condition. So transfer of technology is 0, anda. Third, will MMRC aircraft ever get manufactured in India? Let me remind you, MMRC stands for Medium Multi-Role Combat Aircraft. And the whole purpose was to manufacture them ultimately by transfer of technology in India. So 1, you get technology in India. 2, you generate employment. 3, you manufacture here. And 4th and most important, ultimately you, India, become an exporting country. Now, entire MMCR is perhaps scrapped. Related question, are you therefore going to be happy only with the light combat aircraft, LCA, what we call Tejas?
Remember, medium multi-role combat is obviously a higher category than light. We demand that the Prime Minister, with this great jingoism about patriotism, national security and defense of India, comes clean on this, because friends, repeatedly the Air Force has demanded at least 45 squadrons comprising 20 aircraft each. 45 squadrons. Today we have less than 27 comprising mixed and mirages. So Mr. Prime Minister, Mr. Defense Minister, are you saying that you are compromising national security with China doing daily incursions, with Pakistan just today and yesterday talking of Kashmir, with so many things happening in our neighborhood, Afghanistan, this, there and the other? The whole Rafale deal was started years ago because we wanted to increase by 10-15 squadrons. You are now saying that we don't need. Remember Mr. Defense Minister's last statement. So how do you not need when your own calculations, your own Air Force has repeatedly talked of the need? It can only be at the cost of national security. So if they will be manufactured, then these statements are false. If they will not be manufactured, there is no make in India, there is no TOT, there is no employment, there is no export. And if they will be manufactured in India, please clarify, Mr. Prime Minister, Mr. Defense Minister, who will manufacture? Very important question. HAL, Hindustan Aeronautics Limited, or some unnamed but known private manufacturer? Can India's defense preparedness be met by adding just 1 or 2 more squadrons to our existing 35 squadrons strength? Please answer the need question. We don't need 10 squadrons as your Air Force demands, we need only 1 or 2. Can your diplomatic moves in China and Pakistan be adequately protected and secured by such minimal advance of medium multi-range aircraft? Friends, it is mysterious. Remember, the original plan was to get 18 Rafales in flyaway condition. Every TOT component has a flyaway component also, because you want it quickly, no problem. And 108, I repeat, 108, which is like 6 squadrons or 5 squadrons, to be manufactured under TOT by a public sector. 3 points. TOT, transfer technology, public sector and manufacture in India. Here is Mr. Modi talking of Make in India. The Defense Minister is actually committing the hugest irony by saying that we are promoting Make in India by cancelling 108 manufacturing in India. Is this some kind of a cruel joke of the nation? We have most importantly received contradictory statements. No answers. मैं देश की तरफ से कांग्रेस पार्टी की हैसियत से मांग करता हूं, डिमांड करता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जिस प्रकार से उलट-पुलट के वक्तव्य आ रहे हैं, जिस प्रकार के अजीबोगरीब वक्तव्य आ ही नहीं रहे, वक्तव्य दिए जा रहे हैं दिन प्रतिदिन एक ऐसे ओहदे वाले व्यक्ति से, रक्षा मंत्री खुद, कि अगर ये दुखद नहीं होता तो ये मजाकिया होता। क्या हुआ है मैं आपके समक्ष बड़े संक्षेप में रखना चाहता हूं। शुरुआत में ये डील राफेल की 108 हवाई जहाज, जो करीब करीब 15-20 स्क्वाड्रन बना सकती है, उनको हिंदुस्तान में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत औद्योगिक रूप से बनाने का प्लान था। इससे भारत में रोजगार मिलता है, इससे भारत में तकनीक आती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और उसको एक पब्लिक सेक्टर HAL के अंतर्गत प्रोड्यूस करने का शुरुआत से प्लान। 18 एयरक्राफ्ट को
जिसे कहते हैं फ्लाई अवे कंडीशन में लेने का प्रोग्राम। आज क्या हुआ, एक महीने के अंदर 5 वक्तव्य दिए हैं रक्षा मंत्री ने, और मैंने आपको एक सूची दी है कोटेशन के साथ। मैंने वो कोटेशन पढ़े हैं, मैं वापस नहीं पढ़ूंगा। कोटेशन है, समरी नहीं है। अप्रैल 13 को कि हम 36 से ऊपर जो खरीदेंगे नेगोशिएट करके खरीदेंगे। 16 अप्रैल को हमें जरूरत तो है, लेकिन अब कैसे खरीदें इसको हमको वर्कआउट करना। 11 मई हम और कोई नहीं खरीदेंगे 36 के बाद, और इस नहीं खरीद के नीति के अंतर्गत हम 65,000 करोड़ रुपए की बचत करेंगे, जिसको हम मेक इन इंडिया में उपयोग लेंगे। मई 26 मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम नहीं खरीदेंगे, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हम खरीदेंगे। और अंतिम 4 दिन पहले 31 मई हम बाकी 36 के ऊपर एक भी एयरक्राफ्ट और नहीं खरीद रहे हैं। मुझे भी शौक है BMW और मर्सिडीज में बैठने का, लेकिन नंबर 1 मेरे पास पैसे नहीं है खरीदने की, दूसरा मुझे जरूरत नहीं है BMW और मर्सिडीज। तो हम पूछना चाहेंगे आपके जरिए कि माननीय मंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार जब आपके खुद के एयरफोर्स ने बार-बार लिखित मांग की कि हमारे जो स्क्वाड्रन है अभी 30-35, उनको कम से कम 10 से न हो तो 20 स्क्वाड्रन से बढ़ाना है, उन मांग का क्या हो, झूठी थी क्या? क्या आपकी नीड बेस्ड असेसमेंट, जिसको आप कहते हैं, जरूरत के आधार पे जो आप विश्लेषण करते हैं, उसमें ये लिखा था कि आपको आवश्यकता नहीं है किसी और हवाई जहाज की? और विशेष रूप से ये है MMRCA एयरक्राफ्ट, जिसको कहा जाता है मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो नहीं है हमारे पास इंडिजिनस रूप से भारत में बनाई हुई है। तो लाइट कॉम्बैट है, तेजस LCA से कहते। तो मीडियम से लाइट में चले गए आप, क्या इससे राष्ट्रीय सुरक्षा होगी? कौन प्रोड्यूस करेगा इसको भारत में? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, या कोई जाना माना लेकिन जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है उद्योगपति? क्या आप भारत की सुरक्षा इक्का दुक्का स्क्वाड्रन बढ़ा के 36 एयरक्राफ्ट फ्लाई कंडीशन में लाके उसकी पूर्ति कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण और ये सबसे बड़ी विडंबना भी है कि आप मेक इन इंडिया की बात दिन प्रतिदिन करते हैं, फ्रांस में भी की थी। क्या आप 36 के ऊपर 108 कैंसिल करके, भारत में प्रोड्यूस नहीं करके, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को विंडो से बाहर फेंक के, भारत से निर्यात नहीं करके, भारत में रोजगार नहीं देके, क्या आप मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करते हैं? ये मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने या बढ़ावा देने की कौन सी नीति है? विचित्र है। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका कोई जवाबदेही नहीं। ये अचानक बदलाव कब हुआ? क्या इसका दूरगामी उद्देश्य है? मैं समझता हूं ये अत्यंत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। और एक तरफ जब चीन, हम जानते हैं क्या कर रहा है, दूसरी तरफ हम जानते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार के वक्तव्य आजकल भी दिए हैं। हम जानते हैं कि हमारे पड़ोसी क्षेत्र में अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, बर्मा तक क्या हालत है। इस संदर्भ के बीच इस प्रकार के एक बड़े रहस्यमय वक्तव्य और 5 उल्टे-पुल्टे वक्तव्य 1 महीने के अंदर, मैं समझता हूं देश की मांग है, जवाबदेही तुरंत होनी चाहिए।